Hello everyone, welcome to Trade Exposed once again. I hope you guys are enjoying this long weekend and markets has been rough and we were facing some real bad and tough days, but I am glad that you guys gone through it because those who will last in these kind of tough situations will make money from the market eventually. So today we are here with again our stock recommendations video. In our last stock recommendation video, if you guys remember, we had discussed a stock called SMS Pharma from the pharmaceutical sector, and you guys can as you can guys can see the stock has given its target that we have discussed on that video. The whole analysis was shared on our last video and the stock has hit the target and gave a return of over 20-25% in just within couple of weeks. Okay, so here we are today with our stock recommendation video, but again, if you are new to the channel, make sure you hit the subscribe button. And before we go ahead, please read the disclaimer. This is not buying or selling recommendation. This is just purely for educational purpose, just to guide you how you can analyze about stock market and the charts. And if you want to if you want us to continue this series, please make sure you hit the like, and let's go ahead and discuss the stocks for today. So the first stock for today is Zensar Technology. Okay, so this is our stock and the stock has given a very solid up move in the last trading session. Trading went upwards by 5% almost. And let's see let's see some things over here first, and then we move on to the charts and see why it is looking so good to us right now. Okay, so stock dividend भी देता है, stock gives dividend, stock का financial performance has been decent, nothing outstanding, but technical analysis and chart wise the stock is looking very good. Okay, so let's see what's happening on Zensar Technologies over the chart. So here is the weekly chart of Zensar Technology. Let's quickly hide the moving averages and see purely price action perspective what is happening over here in Zensar. So this is a chart of Zensar Technology, and as we can see, if we can draw a rectangular box over here from this low, this high to this high, we can clearly see the stock has given a breakout and it is kind of a cup and handle kind of pattern. The stock tried to give this breakout few weeks back, but the market conditions were negative, so it came down. So after a perfect retest, the stock is looking to shoot up again, and यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा base formation हो रहा है. Like right here, there is a very solid base forming around this zone, so which will act as a support. So stock is looking very good at the current scenario. Volumes भी आ रहे हैं, volumes are coming, and we believe it has been a long accumulation phase of 3 years, almost 3 years. So if this breakout managed to sustain, the stock will move up surely, and targets can be pretty lucrative from the current scenario. So let's see what kind of target the stock. So here two things can happen. The stock may shoot up straight away, which is a rarity. So probably stock will go up and then retest and test these support levels and then move up again. So our targets यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं ये देखते हैं थोड़ा. So our targets in this current scenario, if we buy around this price of previous hike a break पे, if we buy around this price of 604, above 600 हम लोग इसमें बाई पोजीशन एंटर कर सकते हैं. आवर रिस्क विल बी 14-15% का रिस्क रहेगा, कप एंड हैंडल पैटर्न है, एंड आवर टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 1:2 के टारगेट्स लेके हम लोग चलेंगे. 1:3 तक भी टारगेट्स आ सकते हैं. वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है, सो टारगेट्स विल बी अराउंड 750-770 लेवल्स. स्टॉप लॉस विल बी 520 ऑन क्लोजिंग बेसिस. स्टॉक इज लुकिंग रियली डिसेंट. वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, एक्यूमुलेशन फेज कंप्लीट हो गया है, ब्रेकआउट फेल्ड हुआ है, नाउ अगेन ब्रेकआउट का ट्राइंग हो रहा है. सो इट माइट बी दिस टाइम, so make sure you keep this stock in our radar. So our second stock for today is Captain Polyplus, which is somewhere related to the solar sector, and the stock has given a decent move in the last week, and it is also been in news, so that is why it is in our radar. Although it is a very small cap penny kind of stock, so we don't recommend these kind of stocks usually, but stock is looking very decent on the charts.
सो लेट्स सी, फंडामेंटल्स तो देखने लायक उतना कुछ है नहीं फंडामेंटल्स में, लेकिन चार्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है. सो लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. सो दिस इज कैप्टन पॉलीप्लस वीकली चार्ट. वॉल्यूम्स आप लोग देख सकते हो, वॉल्यूम्स कितने हाई रेंज में वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं. सो दैट मीन्स इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड एग्रेसिव वे पे बाइंग हो रही है. लगातार हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होते जा रहा है. सो इफ आई जूम आउट द चार्ट वी कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इट इज़ अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट वी कैन से. 2021 से स्टॉक कंसोलिडेट एंड करेक्ट कर रहा है. एंड अगर मंथली चार्ट पे थोड़ा सा जाए हम लोग, थोड़ा टाइम देखें. सो लेट्स गो टू द 1 मंथ चार्ट. सी मंथली चार्ट में भी सेम चीज़ हो रहा है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है एंड द ब्रेकआउट इज लुकिंग रियली सॉलिड एट द करंट सिनेरियो. सो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख सकते हैं, इफ़ वी कैन कॉल इट अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट. सो कहीं ना कहीं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्टॉक बनाते हुए आगे आगे बढ़ रहा है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स गो टू द वीकली चार्ट अगेन. वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है वो देखते हैं थोड़ा. सो ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसका ब्रेक ऑलरेडी आ चुका है एंड द स्टॉक इज सस्टेनिंग द ब्रेकआउट लेवल. सो यहाँ से दो चीज़ हो सकता है, या तो स्टॉक ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा एंड रैली विल गो ऑन, या फिर स्टॉक फिर से रिटेस्ट करने के लिए आएगा, विच इज़ हाईली likely in this kind of scenario. But again I am very positive on this one that it might continue the rally altogether. And यहाँ पे एक छोटा सा base kind of form करके stock is going upwards and it will keep moving up. So the base will be acting as our support and it will also act as our stop loss. So यहाँ कहीं पे हम लोग stop loss plot करेंगे around this place particular region. हम लोग यहाँ कहीं पे stop loss plot करेंगे. So and from here on we are expecting a 1:2 risk reward. So let's plot the targets and buying price. Buying will be CMP 58, total buying नहीं 50% buying करना है. And then again when the stock retests around 54 levels we can add more. So this will be our first buy zone and our stop loss will be around 15 to 16% का stop loss रहेगा, 17% to be precise. and 1:1 का टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन 1:1.5 तक भी टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. कोई आश्चर्य होने के बात नहीं है, बिकॉज when stock is breaking out after such a long consolidation and there is positive news around it, it might give target very soon. So 58 हमारा फर्स्ट बाई होगा, 54 हमारा सेकंड बाई होगा. स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 47 क्लोजिंग बेसिस पे एंड वीकली पे क्लोजिंग बेसिस पे, एंड टारगेट्स विल बी अराउंड 70-75 रुपीज़. This one is also looking really decent. Make sure you add it to your watch list and observe it in the next week. So these were the two stocks that are looking really good right now on our radar. So make sure you analyze them on your own and watch them for the next week. So if you like the video, make sure you hit the like button and we will continue the series and we will bring more videos. Also, if you're new to the channel, make sure you hit the subscribe button. I will see you guys in the next video. Until then, take care.